Yes. Screen is shared. Yes. Yes. Chapter number 8. Introduction to trigonometry. Introduction to trigonometry. Yes. Please do your homework daily. Please do your homework daily. Okay. If you will don't complete your homework daily, within 1 week or 10 days, I have completed 2 chapters. That is probability and chapter number 7 coordinates value. I hope that I will finish within 1 week this chapter also. Okay. Okay. So please try to understand and join the class daily and try to complete your notebook. As you know that when the school will reopen, all the teacher will bring the notebook that is completed by you or not. And as you know that there is internal assessment marks of notebook. So please complete your notebook daily. After that, if you will not complete your homework daily, after that you will ask your friends to give me your notebook. I have to complete my work. Why do you create such problems? So please complete your work daily. Okay. Now I want to tell you that trigonometry is always applied in right angle triangle always. Always in right angle triangle. Yes, A, B and C. It is a right angle triangle. Okay. In right angle triangle, AB is base. AB is base. And in right angle triangle, your BC is base. Now perpendicular, sorry. Perpendicular. And it is your hypotenuse. Okay. But according to angles, जब हम एंगल की बात करेंगे, then your base and perpendicular will be changed. आपका क्या है, perpendicular base जो है वो चेंज हो सकता है. ये फिक्स नहीं है कि जो perpendicular हमेशा क्या है वर्टिकल लाइन पे ही आएगा, या बेस जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आएगा. It is not fixed. It depends on the angle. यह हमेशा एंगल पे डिपेंड करता है कि आपने एंगल को क्या कंसीडर कर रखा है. ठीक है, आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन trigonometry I want to tell you that there are some trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Trigonometric ratios. You are studying first time this chapter. In trigonometry, it start from 10th standard. ठीक है? Yes. First is your first trigonometric ratio is sin theta. Yes. I am taking angle here is theta. Theta. If my angle, this is theta. This is theta and this is your right angle. On this side, right angle and angle theta will be there, that will be base. जिस साइड के ऊपर राइट एंगल होगा और जो एंगल थीटा होगा, थीटा हो सकता है, एंगल फाई हो सकता है, एंगल ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
एंगल आपका ए हो सकता है, एंगल आपका बी हो सकता है, एंगल आपका सी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास। एंगल आपके पास थीटा हो सकता है, एंगल आपके पास फाई हो सकता है, एंगल आपके पास साई हो सकता है। ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। यस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? So please repeat that theta and phi. Yes, Shreya Patel. It is not a big issue. It is the angle. It is given written. जैसे मान लो अभी मैंने लिखा sin theta, कहते theta is the angle. Theta is the angle. अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया sin A, sin is the trigonometric ratio. A is represent the angle. Sin C, sin is the trigonometric ratio and C represent the angle. Okay? Sin, sin psi, sin phi. These are the angles. ये क्या है? एंगल आपके पास. Okay? Okay, Any doubt, any problems? सर जब हम दो एंगल बोलेंगे मतलब साइन ए अगर हम बोलेंगे तो फिर हमारा बेस ए बी हो जाएगा। मतलब जो साइड को लेके चलेंगे उसी एंगल के अकॉर्डिंग जैसे साइन Yes, yes. होता है और साइड Yes, yes. Listen to me. अब आपके पास जो एंगल है वो क्या है? थीटा है कि नहीं है? थीटा है। तो जिस साइड के ऊपर थीटा, लिसन, जिस साइड में पहले कंप्लीट कर लीजिए, जिस साइड के ऊपर क्या है? थीटा है और राइट एंगल, वो क्या होगा? बेस होगा। ओके, एंड अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज, 100% हाइपोटेन्यूज। Opposite side of right angle will be hypotenuse, and opposite side of angle theta, angle A, angle B, angle C will given in the question will be perpendicular. Base क्या होगा? बताइए मेरे को. What will be your base? AB. हमेशा ये भी होगा क्या? एंगल अकॉर्डिंग टू एंगल मेरे को बताइए, ऐसे नहीं, अकॉर्डिंग टू एंगल। So when 90 degrees one angle, another angle is theta. Yes, Shreya Patel is right. On that side, in right angle, an angle will be given. That side will be your base. Opposite side of right angle will be your hypotenuse. Opposite side of angle will be your perpendicular. ठीक है? First of all, you have to recognize that what is your base, what is your perpendicular, what is your hypotenuse. In same question, the angle will be changed. एक ही क्वेश्चन में एंगल बार-बार चेंज होंगे। कभी वो साइन ए बोलेगा, कभी वो साइन सी बोलेगा। ये सर क्योंकि अगर साइन ए कुछ अलग हो सकता है और कॉट ए कुछ अलग हो सकता है, तो एंगल में वेरी। हाँ, it depends on the angle. Okay? Yes. Your next trigonometric ratio is cos theta. Next is your cos theta. Listen. Next is your cos theta. Cos theta. There are 6 trigonometric ratios. Sin theta, cos theta. Next is your tan theta. ठीक है ना? Next is your sin theta. That is your theta, then sec theta, and then cot theta. That Yes, is the total yes. of all the three. yes cosec theta. Next is your sec theta, Tan theta. and next is your sixth is cot theta. Cot theta. Any doubt? Any problems? No, sir. No problems. No, sir. Yes.
This is your right angle triangle. And it is A, B, C. It is the right angle. Okay. I am written a sentence. I am written a sentence. What is the sentence? Pandit Badri Prasad हर हर बोले यस हर बोले. सोना चांदी दो Next is your सोना सोना चांदी चांदी तोले. And next is your तो ये क्या आप लिख रहे हैं मतलब सोना प्रगति. One second. शॉर्ट पहले मेरे को सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिए आप. ठीक ना. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. चौर संदूक खोले. चौर संदूक खोले. ठीक है. नेक्स्ट इज योर चौर संदूक खोले. CH छोले क्या है, दो बनेगा सी से. ठीक है ना यहाँ पे. ओके. ठीक है. कोई सेंटेंस यहाँ पे मिलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले चौर संदूक खोले. ठीक है. नेक्स्ट एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. एक सेंटेंस ये भी क्या कर सकते हो. पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. ये वाला ज्यादा अच्छा. पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. कैसा लगा? बहुत अच्छा है सर. नेक्स्ट इज योर पापा बीड़ी पियोगे. हाँ हाँ बेटा. ये और भी अच्छा है. है भाई. कैसा लग रहा है? जब जोकिंग क्लास है भाई. सबसे पहले आप क्या है सुनो. सबसे पहले आप क्या कैमरा ऑन कीजिए, उसके बाद पढ़ाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. स्विच ऑन योर कैमरा. सर मैं ये पूछ रही हूँ जो आप ये बता मतलब ये है क्या? ये सब कुछ बताएंगे प्रगति बताएंगे तुमको. यस. ओके जस्ट वेट प्रगति वेट. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. हमें पंडित से कुछ लेना देना नहीं है, ना बद्री से ना प्रसाद से ना हर हर बोले से कुछ नहीं करना. we have to require pandit from pandit we have to require from p h b s c t and c s and c. Okay. Yes. Now p represent your p. Yes. Your p represent perpendicular, h represent hypotenuse, b is your base, h is your hypotenuse, t is perpendicular and b is your base. Okay. Now first is your p by h, and in right angle triangle, as you know that it is your right angle triangle. I am taking about angle A, and this is your angle B, and this is your C. Now your angle is A. Angle is your A, and right angle is your B. So base is your AB. And just opposite A, it is your perpendicular. Perpendicular. And next is your hypotenuse.
Yes. Hypotenuse means H. We will take base. We will take B, and perpendicular we will take P. Okay. Yes, sir. Yes. Now I'm talking about the first sine A. Yes. In sine A, it is your sine. Yes. Listen. Sona means your sine. I am talking about Sona. It is your sine. Sine is your P by H. Okay. Yes. Is it clear or not? Sona, from Yes. Sona. Yes. From Sona, I am talking about the sine of angle A. That is P by H. Perpendicular upon hypotenuse. What is your perpendicular? BC. And hypotenuse is AC. Any doubt, any problem? Any doubt, any problems? Yes. Next is your Chandi. I am talking about Chandi. Chandi is your from C. C is your cos. Here is your cos. Chandi. It is your cos theta, and it is your B by H. That is your B by H. Badri represent the B and Harp represent the H. Yes, you can write such as okay. Yes, you can write such as Pandit, Badri, Prasad, Harp, Bole, Sona, Chandi, Tole. You can write such as Pandit, Badri, Prasad, Har, Bole, Sona, Chandi, Tole. Okay? Yes. Perpendicular upon में hypotenuse is your sin theta, sin A. Base upon में hypotenuse is your cos of angle A. That is your base upon में base upon hypotenuse. What is your base? Base upon hypotenuse. Base is your AC. Next is your perpendicular upon the base is your tan theta, tan A. Tan A. Perpendicular upon base. Perpendicular upon the base. Perpendicular upon base. BC upon AB. BC upon AB. BC upon AB. Any doubt, any problems? No, sir. Do it fast. Yes, do it fast. Are you done? Yes, sir. Okay, very good. Yes, it is your base perpendicular. That is your P. It is your base B. It is your hypotenuse H. Okay. Now it is your listen to me. जब मैं यहाँ पे sin थीटा की बात करूँगा, ठीक है, तो sin थीटा ऐसे है इस साइड। जब यहाँ पे मैं इस लाइन की बात करूँगा, यहाँ पे ये लाइन जो है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, तो मैं ऐसे आऊँगा from up to down, up to down. Okay. When I am talking about this. That is your cosec theta, that is your sec theta, that is your cot theta. I will just opposite side, reverse side, from bottom to top. Cosec theta is just reciprocal of sin theta, and sec theta is just reciprocal of cos theta, and cos theta is just reciprocal of tan theta. Direction will be changed this side.
and this side. Okay? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, yes. Yes. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी खोले. Yes, direction will be from this side. Okay. Now, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जो संदूक खोले. Your direction will be changed and it become this side. Okay. Any doubt? समझ में आ रहा है? Yes. Now please tell me. Yes. Yes. Please tell me what is your sin A, cos A, tan A. I have already talking about it. Now please tell me what is your cosec A. And it is hypotenuse upon the perpendicular. Hypotenuse your AC upon BC. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रगति लिसन. यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. आपके पास जो साइन A आया है वो आया होगा BC by AC. चेक कीजिए. Sin A BC by AC, but cosec A just reciprocal of sin A. Yes, you can write such as that is 1 by sin A. It can also be written as. Okay. Now cosec A is equal to 1 by sin A. You can write such as. Now next is your sec A. Yes, what is the formula? Please tell me. Not AC. Yes, hypotenuse upon B. BC upon AB. Students, listen to me. Your side can be changed. कभी आपके पास AC होगी, कभी आपके पास PQ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन hypotenuse based फार्मूला चेंज नहीं होता. फर्स्ट इसको याद कीजिए आप. AC BC में याद मत कीजिए. ये तो अकॉर्डिंग टू साइड्स ये अपना आप आ जाएंगे. ओके. Sec A, अगर आपसे कोई पूछे कि sec A क्या होता है, you have to give the answer hypotenuse upon by base. You will not give the answer AC upon by BC this and this. ये आंसर नहीं है इसका. ये तो आपकी ट्रायंगल पे डिपेंड कर रहा है कि आपने ट्रायंगल में जो लेवल कर रखा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है. आप चेंज कर दे तो फिर वेरी करेगा. यस, वो वेरी करेगा वहां पे. ओके, लेकिन sec A hypotenuse upon by base होता है तो होता है. ओके. यस. Now hypotenuse is your AC and base is AB and your cosec A. Please check it. Cosec A. Cos A. What is your cos A? Base upon में hypotenuse and in this question cos A AB by AC. Am I right or wrong? It means it is the reciprocal of 1 by cos A. Okay? Yes. Now next is your cot A. What will be cot A? Base upon perpendicular. What is your base? And AB by BC. One upon में tan. Any doubt? Any problems? Have you done?
कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके ओके, यस, हैव यू डन? Yes, May I sir. take it? Yes, sir. Okay, Yes, sir. yes, yes. Yes. Now my next topic is trigonometric ratios. I reverse the angle. I am reversing the angles. मैं एंगल को रिवर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिएगा. C. Yes. That is angle A, B and C. But it is your right angle. I am taking angle C. That is your first is. Yes. That is Pandit, Badri, Prasad, Har, Bole, Sona, Chandi, Tole, and the direction will be this side. And Pandit, Badri, Prasad, Har, Bole, Chor, Sanduk, Khole. And your direction will be this side. Okay. What will be your Then base? now our base will become BC. Why? Why? Then because theta and right angle, the side between theta and right angle is always base and opposite to theta is perpendicular. Yes. Do it fast. Only 1 minute left. Yes. Your sine C. Perpendicular upon the hypotenuse. Sine C. AB upon AC. AB upon BAC. Very good. Next is your cos C. Now cos C will Base upon become the base hypotenuse. upon hypotenuse. Base is your BC. BC upon AC. Upon AC. Yes. Next is your tan C. Perpendicular upon the base. AB upon B. Upon base, AB upon B. AB upon BC. Okay. Now your next is cosec A. Cosec. Oh, sorry. Wait. 1 second. A नहीं C है. Cosec C. Cosec C is the just reciprocal of sin C. And sin C is your AC upon AB. You can write such as AC upon AB. You can write such as. Okay. Now sec A. Reciprocal of 1 opposite. फिर से आता है. यहाँ पे देखो एंगल चेंज करके सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. ओके. sec C. Yes, sir. cos C. हाँ secant. cosecant, secant, cotangent, tangent. Okay. Don't confuse. Okay. इसको ऐसे याद कीजिए. sin, cos, tan, sec, cosec ऐसे याद कीजिए. वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म होती है. ओके. cos C. cos. AC by BC. Am I right or wrong? Now your Right, sir. cot C is reciprocal of 1 by tan C, and your tan is BC by BC upon AB. It's BC upon AB. BC upon AB. That completed. Yes. It's sec is your AC by BC, AC by AB. Okay. yes, sir. Yes.